achieve what you Recording in want to be. progress. ओ अभी चालू किया, माय गुडनेस। ओ ठीक है, कोई बात। तो then you can have what you want to be, what you want to have, and what you want to do as per your priority, because these are the things you want to have in your life, you want to be in your life, you want to do in your life. So with full faith and full FTB alignment, do that, and then you will have that. Suppose it gets बहुत overwhelming लग रहा है कि so how can I achieve so many things? In that case, what can we do? Write down 100 successes so far in your life. It could be very small success. Just riding a bicycle is a success for me. So likewise, if you write 100 successes, what will help? When it will motivate you, it will empower you, it will inspire you when you are especially feeling low. So you can refer to those 100, say, oh, I have done only 100 successes, now I can go for more successes also. So Jivika, this regret is related. I would try to connect the dot with another book, 5 Types of Wealth by Sahil Bloom. So in that case, if you look, if I don't have this regret, what I can have is, I can have mental wealth. I can realize my true potential. I can live my true life, my true purpose of life. I can have time wealth. I can prioritize my time and focusing on what matters to me the most. And also financial wealth, because since I'm doing what I love with full focus, I will be only truly successful and will have financial freedom. So if you don't have this regret, we can have these 3 types of wealth in our life. जीविका कमाने में कभी इतना व्यस्त मत हो जाना कि तुम जीवन जीना ही भूल जाओ. How is the Josh? How is the Josh? On the top of the world. Yeah. That's great. So that brings us to regret number 2. I wish I hadn't worked so hard. When we are young and we are pursuing our dreams, our goals, we are full of josh. जैसा अभी हमने बोला, high josh. We are all high josh. We are having extra energy, and we put up extra hours of efforts in our careers, in our business, to achieve in 1 year what others have achieved in 5 or 10 years. And we took extra burdens, extra responsibility, and live life with stress and anxiety. We may achieve our desired dreams and goals, but at what cost? Social wealth is the first thing we'll be missing. I surely miss witnessing my son's growing days from infant to teen to young one. When he became young, I couldn't realize even. I couldn't remember, and years went so fast in the blink of an eye. And during those days, there was no mobile camera, so we cannot capture those moments. When he started talking, when he started walking, how he start walking. So those memories I don't have. And in this age of mobile cameras, you can definitely have those kind of things. These people have also said that they miss their children, youth, and their partner's companionship, because we are so engaged in our business activity, career growth, that we ignore those people around us, and that will have a reverse effect. And when we overwork and extra stress, we take extra stress, that will lead to deterioration of health, because we all know 90% of our all diseases are psychosomatic diseases. They are all related to stress and our thoughts and our beliefs. And we realize value of anything like health, relationship, when we lose them. So how many of you can relate to this? How many of you are having this kind of regret? At least don't want to have this kind of regret in future. Say aye. 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 So give enough time and attention to your relationship, which are priceless. And the moment passed with them are not going to come back again. Cherish every moment of your life with your loved one. Capture every
memorable moments of your life and your loved one with mobile camera. So Google Baba will remind you over time, okay, these were the memory you created in this month, in this year. They are very good and very smart at helping us recalling our old memories. So you can have those nostalgic moment. You can you can go through and relish and cherish those moments you spent with your loved one. वक्त पे दिल खोल लिया होता यारों के साथ, तो आज न खोलना पड़ता हॉस्पिटल में औजारों के साथ. हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है, और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है. So this brings to our regret number 3. I wish I had the courage to express my feelings. Many times what happens, it's not about the romantic feeling only. We are talking about the American, he could not express his romantic feeling to Sonali Bendre in movie Sarfarosh. It's talking about the general feeling we are not able to express to our parents, to our siblings, to our life partner, to our children, to our friends, to our colleagues. We are not able to express our own feelings, and then we have, oh my god, I should have said this at that time, I should have definitely conveyed this to him, and then we have those regrets in our life. So how many times we appreciate them, and how many times we say I love you to our parents, our life partner, our children? When was the last time you said I love you to your partner, your children, your parents? You revisit again and say I love you, appreciate them before it's too late. So if when you suppress our feeling, well, sometimes you want to avoid the conflicts, to avoid conflicts with parents, to avoid conflict with friends, to avoid conflict with colleagues. So we try to suppress our feeling. But what will that? We won't be able to do what we wanted to achieve. We won't be able to realize our true potential. You remember the story of Farhan of Three Idiot. Amir Khan has said, "आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद you will be lying on a hospital bed and सोच रहा होगा कि लेटर हाथ में था, गाड़ी गेट पे खड़ी थी, अगर थोड़ी हिम्मत जुटा लेता तो जिंदगी कुछ और बन जाती." And then Farhan take that step, take that courage, express his feeling to his father that I don't want to be an engineer. Even by chance, if I become an engineer, I'll be a very bad engineer. But if I pursue my passion of photography, even if what I have in my life, I'll be too happy with what I have. Ultimately, you'll be able to convince his father because it was a movie, may not be in a real case also. So we need to express our feeling. When we don't express our feeling, that gets bogged down in our heart, and that bitterness and resentment can deteriorate our physical health also. Many of the cases, the resentment is the leading cause for cancer. So never try to suppress your feeling. Express your feeling whatever in an agreeable way. You want to disagree with someone, be in an agreeable manner. If because of this reason I'm not able to agree with your point, I want to express my feeling this way. न जाने कुछ दिन बाद कैसा माहौल होगा, हम सब दोस्तों में कौन कहां होगा, फिर अगर मिलना होगा तो मिलेंगे सपनों में, जैसे सूखे गुलाब मिलते हैं पुरानी किताबों में. So that brings to fourth regret. I wish I had stayed in touch with my friends. Deep regrets of not having friendship, the time and effort they deserve.
We need to have fun and frolic with family and friends and creating wonderful, long-lasting memories. It all comes down to love and relationship in the end. At the end, nobody asks for कि मेरे पास काश एक और बंगला होता, काश मेरे पास एक big गाड़ी होती. All the worry, all the concern was there about their love and relationship they have with their friends and family. So I'm fortunate that I am staying in my hometown where I did my schooling. So we have a close network of over 4 or 5 school friends who are very closely connected, like a family for last 50 years. And another set of school friends who have all passed our SST together, and we are meeting over chai pe charcha with the nasta and recalling our and nostalgic day of our school time, and then we are cherishing the old memories. And today only I got the sad news that one of our batchmate, our schoolmate, the same batchmate who has passed SSC with us, left for heavenly abode today. Om Shanti. We have only memory of him in a group photo over chai pe charcha. उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम ढल जाए. I have another set of 4 or 5 professional colleagues also who are associated with me since last 25 years, and we are also having good connection like a family, and we have gatherings and we have celebrations together. But many may not be fortunate enough. Like my wife, she has changed 6 to 7 schools during the school days. So many friends, so many faces, difficult to remember even the names of the faces. But in the era of WhatsApp and Facebook, you can definitely connect to your old friends. You can search for them. You can have a Zoom meet. You can have video conference call. You can have a reunion like my wife's schoolmates did after 40 years. And you can have a call to your long-lasting friends. You are not talked to her or him for last maybe so many years. They will be too happy to listen to your voice. I just talked few days back to one of my ex-colleague. After 12 years of a long gap, we both were so happy to listen to each other. We talked to each other. We recalled our old organization days memories. We talked about the other colleagues or of our organization, and it was a happy moment for both of us. You just try this. I'm sure you will definitely like it. You will definitely appreciate. You will definitely feel happy. And so do it now before it is too late, and you will regret. कि काश मैंने उस दिन फोन किया होता तो वो मुझसे जिंदा होता, वो मुझसे बात करता. Now he is no more in my life. Now he is no more in this world. ये ना पूछो कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि ये शिकायत तो उन्हें भी रहती है जिन्हें ये जिंदगी सब कुछ देती है. वो बिल गेट्स हो या डोनाल्ड ट्रंप हो या मुकेश अंबानी हो, एवरीबॉडी हैज सम काइंड ऑफ शिकायत. They are still having something कि मुझे और दो, खुशी दो, और खुशी दो, और हैप्पीनेस दो, और मुझे चाहिए. तो छूले आसमान जमीन की तलाश ना कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश ना कर. So that brings to us our 5th regret. I wish that I had let myself be happier. Ultimately, everything boils down to happiness. Whatever we are doing in our life, we are doing to be happy in our life. आप जो भी कुछ कर रहे हो, you are just final end goal is happiness only. True or true? We all know what makes us happy. हम सब जानते हैं कि what will make us happy. Find happiness in small things. Don't wait for big moments, big achievements to be happy. Be happy for smallest win and celebrate. Do what you love. You can't do, then love what you do. Happiness is inside us only. No external things needed to be happy.
As we can see, it covers all the 5 types of wealth. Physical wealth, I will be healthy, so I will enjoy health freedom, and I will be happy. I will be realizing my true potential, so I will be happy. I will be prioritizing my time with my family, friends, and my passion, so I will be happy. I will be having developing and quality relationship, so I will be live happy. And I will be having finance wealth because I will simplify my lifestyle and decide what is enough for me to live happily. And then I can plan and invest properly so that I can have a financial freedom also. So that is how we can have this. Happiness is a choice. Life is a choice. It's your life. We all have 24 hours in a day. Modi is also 24 hours in a day, and a pew also has a 24 hours in a day. How I choose to spend my 24 hours, my time or my life is up to me. You only have one life to live. No, don't know what will be our next life. Maybe I may be a horse, I may be a dog, I may be a gada, I may be a bird. Whatever life I will be having, this is the only life I have. So at the end of life, what do I want to be remembered for? So for that, my life is a statement. Life is a statement is a guiding star or the guiding which guides our decision in our life. So my life is a statement is I'm a lifelong learner. I believe sharing is caring. I share my learnings with others on various platforms, YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram, WhatsApp. Thereby making this world a bit better, bit happier place to live. So choose consciously, choose wisely, and choose honestly. I choose happiness. What is your choice? You can have a happiness jar. Have you anybody has heard about the happiness jar concept? Anybody there? Happiness jar? Yes, yes. Yeah. Who's there? Manjeet here. Okay, what's that? That jar is like means we put our means like uh, whatever like our wishes are, we put into that jar. Uh, well, quite close to that. Uh, it's a jar only. It's the simple transparent bottle you can use for that, and you can have self-filling medium-sized bag. And what you need to do is, whenever you have a happy moment in your life, what is a small happy moment? Maybe a chai with your close friend, maybe a outing with or dinner with your family, maybe you watch your favorite movie, whatever is that. You write that on a sheet of paper, small with a date. Today is this date, and this is what I have done, and put that sheet in that self-filling bag, and put that bag in the jar. And every week review those sheet. See how many happy moments I have in last week. It will serve two purpose. What will help? First, will come to know what makes you happy, and you will go more for it. It could be a singing, it could be a performance, it could be anything you are that makes you happy. Maybe reading a book, sharing a lesson, anything that makes you happy. And secondly, if you find that this week there is not enough moments of memory of happiness, then in the next week you can go for more of such occasion. You can create more opportunity to be happy. You can have more events and situation to be happy, so that you have a conscious choice to be happy next week. So you can, when you are feeling low, you can go through that happiness jar. Oh, this month I have so many happy moments. I must be happiest person in the world. Yeah, thank you God for everything. So best time for planting a tree was 20 years back. Next best time is today. So start now and live a life free of any regrets. हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले, इच्छाएं अधूरी रह जाए और सांसें खत्म हो जाए, वही मौत है। और इच्छाएं पूरी हो जाए फिर भी सांसें चलती रहे,
वही मोक्ष है. Our life is a beautiful gift given by God to us. When we will live our life beautifully by making right choices, align with our purpose of life, align with our vision, align with our values, it's a return gift to our God. So I will end this session with 3 simple sutras just coined by my wife for living a happy life. स्वस्थ रहो, be healthy physically, mentally, emotionally fit and agile. व्यस्त रहो, prioritize and spend your time and attention on things that matters to you, your relationship and your passion. And मस्त रहो, be happy, cherishing every moment of life. Do what you love or love what you do and be happy. So thank you all from bottom of my heart for your patient, attentive listening. Thank you, thank you, thank you. Great presentation, Bharat ji. Thank you, sir. So we can stop sharing and we can then. So अभी मैं छोटा क्यों हूँ भाई, अभी तो बड़ा होना चाहिए. So anybody has any thoughts or any comments on that? Just आपने कुछ बोलने का मौका ही नहीं छोड़ा भरत भाई. मतलब सॉरी, वो थोड़ा इंटरेक्टिव होता तो ज्यादा अच्छा था, बट इतना जबरदस्त सेशन था, पार्डन, मेरे को तो बोलने के लिए सोचना ही नहीं पड़ा. I just enjoyed my years. Thank you, sir. Thank you, thank you. It was just like a movie. Better than a movie, what I felt. Thank you for a kind comments. Thank you. I am very much humbled to listen to that. I could put some value in your life. It truly touched the heart. Thank you so much, Bharat sir. Thank you. सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी कि you have amalgamated so many things and covered 2 books, and these are 2 bestsellers. Yeah. In a unique way. Simply superb. Thank you. Sir, आपका जवाब We just touched आपकी upon the book Time 5 Types of Wealth. It's a big book of 389 pages. That will cover sometime in future. It's a big book, but just talked about the 5 types of wealth because we need to balance all 5 types of wealth. Just balancing one type or 2 type doesn't help you in growing your life. Then you will have those regrets at the end of your life. I should have balanced all my 5 types of wealth. Because all 5 types are important, and in different seasons of life, different ages, we are having different priorities, and according to those, our wealth priorities also changes. When you are young, our financial wealth will be more prominently required. When we grow and we get married, our social wealth is also required. Then as you grow again, physical health is very much prominently required. So as per season, as per the age we grow, the importance and priority of wealth will go on changing, and we need to change according to, and we need to allocate our time and prioritize our time accordingly. सर, आपकी प्रेजेंटेशन की दाद देने के लिए मैं 4 लाइन सोची है. हाँ, प्योर प्लीज. हर लफ्ज में थी खूबसूरती की झलक, आपकी पेशकश ने दिल को छू लिया सबक. अंदाजे बयां में थी कुछ ऐसी बात, हर एक संदर्भ बना दिल का साथ. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you very much for a kind impromptu this thing. Oh, thank you so much. सर आपकी शायरी बहुत अच्छी लगी, हर मौके में बहुत अच्छे से आपने व्यक्त किया है. व्यस्त रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो. And that is what the sutra is coined by my wife. I will do credit to her. So she in our groups, this sutra is very popular. In our recent one of my friends' birthday was celebrated. That time also all together they said this. It's swasth raho, vyast raho, mast raho. These are the 3 simple sutras to live happily. You don't need more than this thing. You need physical health. You need vyastata, means proper, you're prioritizing your time, and happiness. These are 3 things you need, nothing else.
Thank you so much. I really appreciate. Much appreciate. Thank you, thank you, thank you. Bharat Hello, sir, Bharat, Gaurav. I'm here. Can you hear me? Yeah, yeah, Gaurav, go ahead, go Anyone? ahead. yeah. Okay, Gaurav, thank you. please go ahead. Sure, sure. So first of all, as the Pinaki ji and everyone said, कहते हैं ना बुफे खाने के बाद स्वीट खाने के बाद कुछ खाने का मन नहीं करता, right? So it is a kind of a very heavy dose in a very positive manner. कुछ और ऐसा लगा कि कई सारी बुक्स एक साथ पढ़ ली हों. So I think 30 minutes में we got many things. So thank you so much. Hello, Yes, Bharat ji. Can you hear me? Yes, Milind. Yes, Yes, Milind. Milind. Go ahead. Go ahead. Hello. Good. Yeah. Thank Bharat ji for awesome session. It is a double bonus for me as well as for others because I want to see your face and your videos. Definitely, I watch your YouTube videos. But this is the first time I'm hearing your presentation, which is a blockbuster kind of thing, because I got double bonus, not only in English, but in Hindi, and the song which I really like, Hosh walo ko khabar kya. So that word only means a lot to everyone and lot to me. Hosh, that is whole awareness, and you Yeah. bring the awareness throughout whole life in this 30-minute presentation, which everyone like definitely I'm going to listen again and again, which is actually not just the integration of all the aspects of the life, but it came from your experiences. Yeah, you mentioned about the books, different five wills, but the touching for me is the three words which is given by your wife. I think that is came through all your and your wife's wonderful journey of life, which is a lesson for me as well as for everyone. But thank you for sharing, and Bharat, I expect more this kind of sessions from you in future. Thank you. Thank you Thank you. very So thank you for your kind words. Thank you, thank you, thank you, thank yes, you. yes. Gaurav sir, now you can present your presentation. We are eagerly waiting for that. Okay. Sure. Thank you, Rajesh. Let me know I'm sharing my screen once it's visible. Yeah, very much visible. But you Okay, can put in a slideshow. 100% yes. So let me go there. Okay, hope it is on slide mode now. Yeah. Perfectly okay. Perfect. Okay. So first of all, really feeling normally I'm very confident and I enjoy presenting and connecting. But the way Bharat ji has done, as I said, हैप्पीनेस को उन्होंने जो डिफाइन किया है उसके बाद कुछ ज्यादा बच नहीं जाता बट लाइफ में जीने के लिए आई थिंक वी नीड टू learn negotiation skills. So I will take a topic because sometimes we don't get what we deserve. We get only what we ask. So we have to ask more. But before that, I want to just introduce myself within 30 seconds. So I'm a mechanical engineer and MBA in marketing, 20 years already in professional profile, worked in 5 diversified companies. You can see on this, just a second. Let me see if I can go this way. Yeah, pointer. So I worked in 5 different companies. All are big MNCs, Larsen Toubro, Jacobs, and also I will not bore you with my profile, but I can share with you it's a very strategic move which I always did in my career. Different 5 company, 5 different industry, and all 5 big MNCs. So and I'm specialized in procurement, supply chain, negotiation, risk management, and leadership. That's the reason I'm covering the topic of negotiation. And why negotiation mainly? Because you can see on my profile, I'm a global negotiation trainer, TTT, train the trainer. So I teach in my company also the negotiation skill sets. Of course, I did my some project management supply chain from IIT and IIT Delhi and IIT is all everyone knows it's a good one to learn with. And like others, I'm also an NLP practitioner. What is my superpower? Of course, taking the accountability, charge of life. That's the reason I always say I'm the CEO of my life. I will become CEO maybe one day or CXO, I will say, because I want to be a CPO, Chief Procurement Officer. So I do always take the charge. The way we drive and we sit in the car, the way we take the charge, कब life में slow जाना है, fast जाना है, कब brake लगानी है, कब accelerate करना है. So I take the charge always. My core values are growth. My current value and core value both are growth. Of course, so I always grow. Like example, right now I'm 42-year-old, so I say I'm the 4.2 version of mine.
As every year software increase, just upgrade. Next year I will be 4.3 version. So all versions gets increased. I always believe on teamwork. Teamwork के बिना कुछ भी नहीं हो सकता. तो कहते हैं ना, alone you can go fast and together you can go far. So that, and I'm a lifelong learner like all of you. That's the reason I know in this room people are here. What bring me joy? Learning new skill set. And I'm sure today also I learned a lot from Bharatji when he was talking. And I do like spending time with like-minded people like all of you. And cricket is one of my passion after procurement. Of course, procurement and purchase, connecting with people is my first passion, which I am following since 20 years. So this is about me. This also I will just take small just to show you that I'm an industry speaker. I go to many events as a speaker, as a moderator of the sessions in my pharma procurement supply chains awards. I did last year, which is important for all of you, our all female colleagues or female, I will say the people are here around us. So women empowerment, I took a great session last year, November in Noida. So all the top leaders in the companies working with big MNCs, they were there. I will just share the last slide as the learning of that. And 300 plus executive leader in India who are taking some coaching. I'm the co-mentor, not only as a learning there, I'm even teaching there. All those kind of challenges in the career. So of course, it's my hobby to support people, problem solving. So I do enjoy. Why I'm showing this slide, which is very important in life, as the Bharatji also said, we have 24 hours. Everyone has same time. Every one of us, including Modi ji, right? So how you can do more? Like some of you know that I got 3 promotion in my company in 18 months. Everyone has same time. How I got? So it is just about negotiating. That's the reason I'm taking that topic because I know where to say yes, where to say no, which battle to choose, which battle wisely to choose, where to speak, where not to speak. This is the only reason why I'm showing my internal and external presence and my perceived value. In negotiation, also, your perceived value should be high. If you are demonstrating 100, people should think there you are demonstrating 200 or 300. And it is only come when you negotiate it with yourself around your surroundings and learn the skill set of saying no instead of yes. With this, let me start the topic of today. So, as I said at past also, you don't get what you deserve, you get what you negotiate. So here I want to see you all of you like Rajeshwari, Pinaki ji and everyone of around in this room. किसी को बोर्ड चाहिए, किसी को फ्लोर चाहिए, किसी को एरिया चाहिए कि हम बोर्ड से बाहर आ सकें, लैंड चाहिए, लैंड वर्सेस बोर्ड. Someone is customer, someone is seller. तो दोनों की नीड है. How you fulfill the need, how you negotiate, how you made the repo. That is all about in negotiations. So here my question to all of you, I want two things, only two requests. If you loved Bharatji's session and you really are passionate, want to learn this also, I want people to be on camera first. Unless and until you are in driving, you can't do my request to be on camera. If it will not be interactive, I'm telling you, you're not going to get the maximum out of this session. Then only in any case, I have to speak for 20 minutes. I will speak and go. Yeah. Thank you, Shruti. Thanks, Lena. Thanks, Jamie. I want some more people. Yes. Thank you, Sumita ji. Thanks, million. And thank you, Vasudev ji. And well in advance, thanks to others who will be coming on camera in next 1 to 2 minutes. Okay, I want you to put on chat how you consider yourself as an effective negotiator. Are you considering yourself as number one, not good? No, two, basic, I know little bit negotiations. I'm good at negotiations. I'm proficient. Every negotiation I win. And 5 is specialist. I love negotiation. कोई भी जगह पे हो मैं negotiate करना enjoy करता हूँ. And I have shown, I've even teaching negotiation to others. Then you say 5. Thank you. I can see Vasudev ji 5, Shruti 4, Jamie 3, Leena 2. Perfect. Sakshi 4, Vasudev ji again 5. My God, 10 हो गया है Vasudev ji का. Perfect. We want Milin 3, Rajeshwari 4. Awesome. Really great to see. And first of all, love the way Vasudev ji said 5. It means he feel himself as one of the specialists. Want to hear at least one incident from him at last. Perfect. So with this,
At least I can see some of the places 2 and 3, which means you have a room for improvement. Let me try to move you in the end from 2 to 3 to 3 to 4, 2 to 3 at least. And who was on 4, let's be 5. Okay, then one big statement which is very important for every one of you. And it's an eye opener for many of us. Even when I was taking the training globally, I learned this piece that in world only 8% are the trained negotiator, though we put 62% of our time on negotiation activity, and 82% people feel they are above average, which is a very important eye-opening statement. People feel we are a good negotiator. मैं तो सब negotiate कर लेता हूँ. But are they really good in negotiations? Frankly, no. With this, let me ask one question, and I want someone can go on mute, unmute, or they can put in the chat. What comes to mind when you heard the word negotiation? You can go on mute, you can put on chat. Both ways are okay. Negotiation word सुन के ही आपके mind में क्या आता है? Convincing other your point of view. Sorry, Bharat ji? Convincing others your point of view. Convincing. Very nice. Very nice. Convincing. Absolutely. Yes. Anyone else? I need interaction, otherwise it will be monotonous. Get something for a value you perceive. Absolutely, Vasudev. Win-win Yes. situation. Win-win situation. Sakshi, mindful win-win situation. Perfect. I think this was the one I was really looking. Of course, others are also right. Mindfulness, speaking, and listening. Yes, Sakshi, I think you touched upon very important skills in negotiation, which is listening, attention to details. If you will not listen what the person is saying, even the person which is not saying what their body language is saying. So listening is very super powerful tool in negotiation. So with this, rightly said, win-win situation, which means satisfactory value for both the parties. Absolutely. And let's go to the next one. What animal best represent your negotiation style? If you know, like example, when we say dog, we say faithful, right? Those kind of thing. When we say tiger, speed in negotiation. What animal you resonate yourself with? Think about and put in the chat, or you can speak, as I said. Lion. Okay, perfect, Shruti. खा जाएंगे सामने वाली पार्टी को, right? We will take the best out of the deal. Very good. We should have that kind of thought process. Elephant. Great, Vasudev ji. I know that why you put elephant. એટલે Really. ચાલે છે પણ શું કરવું છે? Yes, Sakshi હા horse. હા ઉપર જા. Perfect. Okay. There is a one, all the way, if you know your personality, know your traits, animal in the negotiation style, very good. One is chameleon. Chameleon is गिरगिट. हिंदी में बोलते हैं ना, जहां गया वैसा हो जाना. हरे में गए हरा कलर ले लिया, येलो में गए येलो कलर. So this is very important in negotiation. All of you were right, but this is the best style in negotiation. जैसी situation है, if you heard the term mirroring, right? आप जिसे negotiate कर रहे हो, the way the body posture, if sitting by chin this way, when the person is sitting, if the person is lean, you are also leaning forward. अगर सामने वाला बोल रहा है, this is a really tough time, then you can start with your sentence from the last 3 words of, yes, it's a tough time for all of us. Hence, we have to find a best solution. So be a chameleon whenever you negotiate. Okay, who you consider as best negotiator around you? आपको कौन आसपास में दिखते हैं who are the best negotiator? Happy to hear. Maybe you can put on chat or you can speak also. आसपास कौन ऐसे लोग दिखते हैं? Mothers, absolutely, वासुदेव जी, yes. वो अपनी मनवा के मानते हैं. Yes, mothers. Who else? I need 2-3 answers before I move. Every one of us is a negotiator at any, at every point of life. Yeah, good Yeah. thought. Okay, I believe I got the answer already from 2 persons, Shruti as well as Milind. Mother भी आके कहाँ हार मानती हैं? Kids के सामने, right? And why kids are considered as the best negotiator in the world? Wife is for husband, I agree, Vasudevji, but in life, why kids are the best negotiator? And you can see on my screen the answer. Because they follow 3S. Very, very simple.
राइट, दे आर वेरी स्पेसिफिक, उनको जो चाहिए वही चाहिए, नो हेयर नो देयर। अगर टॉय चाहिए, अगर मॉल में है वो मॉल में गिर जाएंगे, जमीन पे लेट जाएंगे, बट उनको वो चाहिए, राइट। दे आर सिंपल, इधर उधर नहीं जाएंगे, एंड दे आर शॉर्ट, ये चाहिए, एक लाइन खत्म। तो किड्स आर द बेस्ट नेगोशिएटर इन द वर्ल्ड, which is as per the study also it says. So thank you for all who has given the answer, and let's go to the next piece, understanding negotiation now, because you're already into the mode. So negotiation is the art of reaching mutual beneficial agreement through your communication, through compromise and understanding, which covers the context from business deal to personal relationship. अगर आपकी रेपो नहीं बनी, अगर आपने कम्युनिकेट इफेक्टिवली नहीं किया, यू नॉट गोइंग टू गेट बेस्ट। एंड नेगोशिएशन इज नॉट अबाउट सब कुछ लेना। if you are thinking on a lena bank, you will be a lena bank for some time. You have to be a dena bank also. You have to find a win-win situation अगर आप लॉन्ग रन में डील करना चाहते हैं। इफ यू आर ए शॉर्ट टर्म गेनर इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म लूजर, just you have to find the right thought process. It has to be win-win. When we are sitting the table, दूसरा पर्सन, आप हंसते हुए निकलो मीटिंग रूम से बाहर, और दूसरा पर्सन अगर रोता हुआ चीटेड या एक्सप्लॉइटेड समझ के निकला, तो समझ जाना यू लॉस्ट द डील देयर इटसेल्फ. Now let's move to the top 3 skills. If you want to get a win-win, आपको बेस्ट डील मिले और सामने वाला भी खुश होके जाए, then you have to become a effective negotiator. Which are the top 3 skills? First is your communication should be super clear. ऐसा रहना ही नहीं चाहिए room for confusion, room for thinking, was he saying this or why is he saying that? Empathy, एंटर इनटू द सामने वाले के शूज में जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा व्हाई ही सेइंग व्हाट ही इज सेइंग, व्हाई शी इज सेइंग व्हाट शी इज सेइंग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी मच नीडेड. समझना अपने इमोशंस को, व्हाट इज गोइंग थ्रू माय माइंड, माय स्टमक, माय बॉडी, माय थॉट प्रोसेस, व्हाट विल इम्पैक्ट टू मी, व्हाट इज इम्पैक्टिंग टू अदर्स. सेल्फ मास्टरी के बाद ही आप दूसरे की मास्टरी, दूसरे को सेंस कर सकते हैं. सामने वाले के माइंड को रीड करना वो सब सेकेंडरी है. फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ. देन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आएगा ही आएगा. नेगोशिएशंस में कॉन्फ्लिक्ट आना ही है. इफ यू आर अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट, यू कैन नॉट बी ए ग्रेट नेगोशिएटर एनी टाइम इन योर लाइफ. एंड यू मस्ट हैव हर्ड द वन, अनसर्टेनिटी इज एडवेंचर. कंसीडर अनसर्टेनिटी एडवेंचर. हमेशा एंजॉय करो. जब कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स आए, यू हैव टू ब्रिंग द स्माइल. एज यू नो, ऑलरेडी भरत जी हैज शेयर्ड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हैप्पीनेस. तो स्माइल के लिए बोला जाता है, स्माइल इज द कर्व, जो हमारे फेस पे कर्व आ जाती है, कर्व विच सेट एवरीथिंग स्ट्रेट. अगेन आई विल रिपीट, स्माइल इज अ कर्व विच सेट एवरीथिंग स्ट्रेट. तो कितनी भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो, एक स्माइल जरूर आपके फेस पे रहनी चाहिए, विच इज द बिगेस्ट टूल. आपने देखा होगा कई बार ऑफिस में, लॉट ऑफ लोकेशन, सडनली पीपल गेट एंग्री एंड दे स्टार्ट शाउटिंग, एंड एट दैट टाइम इफ यू जस्ट टेक द स्माइल एंड से आर यू ओके, you can understand the power in your words itself at that moment, right? आपने अपना चार्ज छोड़ा नहीं. तो कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने के लिए यू शुड बी देयर. एंड थर्ड, which is another important skill set which you can see on my screen, preparation and adaptability. आपका कम्युनिकेशन कितना अच्छा हो, एम्पैथी है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, अगर आपकी प्रिपरेशन ही नहीं है बिफोर एंटरिंग टू द नेगोशिएशन रूम, यू विल लूज द बैटल. आपकी कितनी स्किल सेट आपको काम में नहीं आएंगी. यू शुड नो what you are going to ask, what you needed, what you are going to do the win-win में, क्या आप कंप्रोमाइज के लिए रेडी हो, कहाँ पे आपको लगता है आर्ग्यूमेंट होगा, क्या आप छोड़ोगे, क्या आप नहीं छोड़ोगे. प्रिपरेशन इज मस्ट. यू नो योर बेंचमार्किंग, यू डू योर होमवर्क. एनी, अगर एग्जांपल आप अपनी स्किल सेट के लिए कोई चार्ज करते हो अपने कस्टमर से, आपको पता होना चाहिए मार्केट में और कौन कौन प्लेयर्स हैं, वो क्या चार्ज कर रहे हैं, व्हाट वैल्यू यू आर डिलीवरिंग, व्हाट इज वैल्यू डिफरेंशिएटर, योर यूएसपी, योर यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, which is going to give you the best deal. And again the adaptability. सब कुछ हो जाने के बाद भी if you are not adapting the situation, adapting to the moment of that, जहां पर आपको win win लेना है, then you will going to lose in negotiation. Are you with me? Any just one or two comments I will just want to see, then I will move next. यहां तक कोई clarification है किसी के mind में? Happy to hear. Whether you resonate, these three skill set will going to help. I want someone unmute and say yes. Sakshi, true, thanks. Yes, Samita, perfect. Rajesh, thanks.
Let's move How to the do next we piece. know the other side's part of the empathy part? How do we Hmm. get to know the other side's emotional content or something? Because for the communication and empathy, we need to know the other side's requirement, or how will I get empathy to someone Yes. on the other side if I थैंक्स फॉर आस्किंग वासुदेव जी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट वही है, नेगोशिएशन में जंप नहीं करना होता। थैंक्स फॉर आस्किंग। लोग जंप करते हैं, सीधे पॉइंट पे आते हैं, सीधे पॉइंट पे नहीं आना होता। कभी कभी नेगोशिएशन में 20 मिनट के लिए आपको इधर उधर की बातें करनी होती है, नेगोशिएशन सिर्फ 5 और 10 मिनट्स का होता है। नो द पर्सन, उनकी पर्सनल डिस्कशन भी किए जाते हैं। हाउ यू आर डूइंग, आपकी फर्स्ट कंपनी है क्या, आप पहले क्या करते थे। ऑफ कोर्स देयर इज ए पोकर फेस पीपल ऑल्सो जो नहीं शेयर करना चाहते, वहां पर आपको एक लिमिटेशंस आ जाती है, वहां पर आपको देख के बात करनी पड़ती है। कुछ लोग इंट्रोवर्ट हैं इन द वे दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट देयर थिंग्स, वहां पर आपको चेंज करने पड़ते हैं सिनेरियो। बट आपको सामने वाले को जानना पड़ता है, व्हाट यू लाइक, उनकी लाइक डिसलाइकिंग पूछनी पड़ती है। क्यों हम नेगोशिएशन मीटिंग करते हैं, तो पहले चाय और कॉफी के लिए टेस्ट जानते हैं उनका, कि और क्या आपका ट्रैवल कैसे रहता है, व्हाट यू लाइक, लाइक और डिसलाइक जानने के लिए। तभी कहते हैं रेपो बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप एम्पैथी में उनसे पूछना पड़ता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग करंटली इन दीज डेज, या आपकी एरिया में क्या चैलेंज है, व्हाट आर द गुड पॉइंट्स यू हैव, व्हाट सक्सेस यू हैव अचीव्ड रिसेंटली। आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, रेलिवेंट क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट रियली हेल्प्स। Hope I'm answering, or happy to extend further also. Yeah, it's okay. Sure, thank you. Let's move to the next, and I'm happy to answer at last also. Of course, there is a 10 minute will be there. Okay, understanding the negotiation process. It is a three-way process: preparation, discussion, and putting the proposal. तो आपकी अगर thoroughly research नहीं है other parties के ऊपर, which वासुदेव जी just asked, आपको जानना पड़ेगा सामने वाले की क्या needs हैं, what they want to have, क्या उनको उनके गोल्स क्या हैं। अपने गोल्स क्लियर पता ही होने चाहिए जो हमें अचीव करने हैं। एंड बांटना इज वन ऑफ द टेक्निक। तो दिस द फर्स्ट टेक्निक आई एम शेयरिंग, बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू ए नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। इन केस मेरा ये नेगोशिएशन फेल हो जाता है, लाइक राजेश्वरी अगर किसी कस्टमर क्लाइंट से बात कर रही है, वो फेल हो जाता है, तो हमारे पे ऑल्टरनेट क्या है। मैंने अगर कोई प्रपोजल रखा, सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो मेरे पास ऑप्शन बी, ऑप्शन सी क्या है। अगर सामने वाले ने मना कर दिया, तो मेरे पास क्या और कौन सा क्लाइंट है जहां मुझे जाना है। When you have this Bartner technique, it really help you a lot. Second piece comes the discussions. आपकी preparation, goals, Bartner when it is clear. Actively listen. As our teammates already said, you should actively listen. Attention to details. Ask the right questions. And right questions के ऊपर एक बहुत अच्छी line है. Any question can be right. Example, someone can ask me what BJP is doing, what Congress is doing. It may be the right question, what our country should do, but it is not relevant because right now into the negotiations. Relevant questions पूछना, उस negotiation से related पूछना, or even if you're asking some question, you should bring the point why I'm asking and how it is relevant to this discussion. Uncover the other party's interest and concern. उनका इंटरेस्ट आपको समझ में आना चाहिए, उनकी कंसर्न क्या है। एग्जाम्पल इसे, नहीं मुझे तो ये चाहिए, हो सकता है सामने वाला वो दे सकता हो, बट आपको उसके बदले में कुछ और देना पड़े। राइट, मे बी द पर्सन, एग्जाम्पल आपको डिस्काउंट चाहिए 40%, सामने वाले के सॉरी मैं 25 के ऊपर नहीं जा सकता, मुझे मैंडेट नहीं है। बट एट दैट टाइम यू आर ओपनिंग वन वेरी ग्रेट पॉइंट, अगर मैं आपको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दूं, मैं आपको 3 क्लाइंट्स और दूं, देन विल यू एग्री। द पर्सन की आईज ओपन हो जाएंगी, हाँ यहाँ इट इज मेकिंग सेंस। तो आपको सामने वाले की कंसर्न समझनी पड़ेगी, व्हाट ही इज सेइंग एंड व्हाई ही इज सेइंग। एंड थर्ड पीस इज प्रपोजल। मेक योर प्रपोजल क्रिएटिव। व्हाई पीपल से, एग्जांपल, व्हाई वी लव्ड द वे भरत जी हैज शेयर टुडे, क्योंकि सभी मोनोटोनस स्क्रीन शो करके, स्लाइड शो करके, आई एम नॉट कंसीडरिंग माई सेल्फ बिकॉज नेगोशिएशन में स्लाइड जरूरी थी। अदरवाइज द वे ही गॉन, उनका यूएसपी था, जो द वे उन्होंने शायरी शेयर की, उन्होंने इतने अच्छे पॉइंट्स हमसे शेयर किए। सिंगिंग ऑल्सो, दिस वॉज द यूनिकनेस, क्रिएटिव बनाया तो हमें सबको पसंद आया। तो योर प्रपोजल शुड बी क्रिएटिव, इट शुड बी वैल्यू एडेड। सामने वाला 4 चीजें मांगे और आप उसको 6 दे दें, आपको देगा ही देगा जो आपको चाहिए फिर। राइट, सो एड्रेस बोथ पार्टीज नीड, समझो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बी विलिंग टू कंप्रोमाइज। विन विन की जगह विन लूज रखोगे या तो आगे फ्यूचर में लूज विन ही होने वाला है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर। अगेन आई विल टेक ए पॉज हियर।
Any one question, burning question, I'm happy to take one. Otherwise, I will move next. Though I'm sure in the end you will get all your answers in next 3 or 4 slides, which is the going to be end. So my question is like, Yes, Jamie. please focus on the salary negotiation also. Right. Salary negotiation में भी Jamie, and I can tell you, in last 2-3 years, मेरी salary double की है मैंने, the way, same way. And I saw the people who had negotiated 100% hike also. One of the very good friend of me negotiated 110% hike. So ये सारी चीजें, ये सब tools काम आते हैं when you work on yourself, you do the self mastery. आपको अपनी value पता है, and as I said, what you are asking, why you are asking, when you are clear, you did the benchmarking, of course, negotiation skills, and there is a very good saying, and of course, most of you have heard, the way you do anything, the way you do everything. अगर आप negotiation life में एक जगह पे करते हो, हर जगह पे आपका एक practice आ जाती है, and excellence is habit. Same way, like Bharat ji said, right? Happiness is habit. Always have to be in happy zone. Similar way. Hope, Jamie, I'm answering here. Yeah. But actually, nowadays, like the market is such that companies are not able, they are not negotiating much. So that's fine. Jamie, I that is got your also point. perception. Sorry, again, I will say, ये हमें लगता है, वही मैं बोल रहा हूँ, हम जो आसपास हम किसको देख रहे हैं, मैं हमेशा देखता हूँ कि अगर मैं जॉब चेंज करूंगा तो एटलीस्ट 1.2 करोड़ 1.4 करोड़ इसके नीचे मैं चेंज ही नहीं करूंगा, एंड आई नो माई वैल्यू. तो मुझे ये क्लियर है कौन सी टॉप 5 कंपनीज हैं, दोज हु कैन अफोर्ड मी, दोज हु कैन, Got it. या दोज हु कैन पे मी, दोज आर द माई फ्रीक्वेंसी मैचिंग कंपनी, जिनको स्किल सेट, माइंड सेट के पैसे देती हैं, ना कि आपसे छोटे छोटे कॉस्ट पे नेगोशिएट करती हैं, है ना. तो वी हैव टू फाइंड द राइट रेलिवेंट कंपनी as per our USP. Okay, perfect. Fine. And you can Thank see, you. Jamie, one thing more help you and everyone here. You can see on screen 7A, which is the secret of negotiation. First, analyze any proposal which comes towards your way. Put the attention on that, attention to all the details. Ask the relevant questions, right questions. क्यों आप ये ऐसा पूछ रहे हो, क्यों आपने ये कॉस्ट ऑफर की, इसमें और क्या देने वाले हैं, what is the inclusion exclusion in the scope, what is the timeline, what is the validity. आपने एग्जाम्पल, आपको सपोज राजेश्वरी जी ने एक ऑफर दिया और आप सोच रहे हैं, 3 दिन के बाद आप उनके पास जाके बोलते हैं ओके आई एम रेडी टू टेक दैट. और लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल, रियल स्टेट का एग्जाम्पल लेते हैं. आपको एक प्रॉपर्टी पसंद आई, आपने ऑफर आई 40 lakhs की, आप 15 दिन के बाद गए, चलो मुझे 40 में दे दो. सामने वाले का सॉरी अभी ये 45 का हो गया है, राइट. आपने कहा अरे ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो 40 था 15 days बैक, आपने छोड़ दिया डील. आप 1 महीने के बाद दोबारा जाते हैं, एक काम करो दे दो 45 में, ही से सॉरी नाउ इट बिकम्स 50 lakhs. सो समटाइम टेकिंग ए राइट कॉल, राइट डिसीजन, आस्किंग दैट कि भैया ये ऑफर वैलिड कब तक है, मैं अगर 15 दिन में फाइनल करूंगा तो क्या ये सेम रहेगा. तो आस्क द राइट क्वेश्चंस, वैलिडिटी आल्सो. आर्ग्यू, यू शुड आर्ग्यू. आर्ग्यू डजंट मीन आपको फाइट करनी है. आस्किंग व्हाई इट इज सो. इफ यू आर सेइंग 45 lakhs और 50 lakh, क्यों है ये 50, आसपास का क्या रेट है. इस तरीके से क्वेश्चंस, आई एम टेकिंग रियल एस्टेट एग्जांपल बिकॉज इट इज आल्सो पार्ट ऑफ माय पैशन. सो वेरी क्लियरली you should ask the relevant questions, argue and get the best clarity for you. Then assist कि क्यों आपने पूछा और आप कहाँ तक जा सकते हैं. ओपन योर बजट. मेरा ये बजट है, मुझे इस बजट में बताइए, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए. अपने पॉइंट्स एकदम क्लियर कर दीजिए, एंड देन let's see whether this is making sense and person can give you the proposal. Adjust, like compromise, as I said. My way and highway वाला नहीं चलता है negotiations में, और उसमें कहीं कहीं चल जाता है, उसके लिए quadrant approach I will show you after this slide. And last is accept. और इसमें सबसे बड़ी, before accepting I can tell you very good eye opener for all of you. हम सोचते हैं सामने वाला, हम पेन क्यों लें, सामने वाला मिनट्स ऑफ मीटिंग बना के भेजेगा, सामने वाला हमारे जो भी पॉइंट डिस्कस हो रहे हैं उसको समराइज करेगा. Always no. First is two thumb rule, learn in the negotiation. 1, हमेशा स्क्राइब, यू शुड बी द स्क्राइबर. आपको ही नोट्स बना के भेजने हैं कि हमने ये 5 पॉइंट डिस्कस किए, आप ही को समराइज करना है लास्ट में. डोंट एक्सपेक्ट सामने वाला समराइज करेगा, वो अपने फेवर के लिए करेगा, आपके फेवर के पॉइंट मिस कर सकता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टेक ए पेन. हम समटाइम्स सोचते हैं ठीक है मेरी बात होगी, सामने वाला भेज देगा, नहीं, आपको ही भेजना है. सेकेंड पॉइंट, आप ही को फर्स्ट प्रपोजल रखना है. लोग कहते हैं सामने वाले को प्रपोजल देने, नो, पावर उसी के पास रहती है जो फर्स्ट में बोलता है कि
आपने दिया था 1 करोड़ का प्रपोजल, बट मैं 60 lakhs के आगे नहीं जा सकता। थर्ड थंब रूल, नेवर एवर लाई इन नेगोशिएशन। आप मुझे 1 करोड़ का दे रहे हो, मुझे तो ये 70 लाख में मिल रहा है मार्केट से। आप प्लीज समझिएगा, जो पर्सन सामने बैठा है आपके, उसका डे इन डे आउट का यही काम है। दैट पर्सन इज ही और शी इज सेलिंग दिस प्रोडक्ट डे इन डे आउट। जैसे आप झूठ बोलोगे, यू विल लूज द ट्रस्ट फॉर एवर। आपने ट्रस्ट ही रेपो ही लूज कर दिया, तो यू नॉट गोइंग टू गेट एनी डील। ट्रस्ट, आई थिंक आई डोंट हैव टू से अबाउट ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट लूज हो गया तो बाकी चीजों का रेलिवेंस खत्म हो जाता है। देन इट्स ओनली जस्ट डील which is of no use much. Moving to next. This piece I don't want to say much, but you can see every country wise people are, you can say, the expressive. Like example, let's go to India. People are very much expressive, and lot of countries you can see like Brazil, they avoid confrontation. India, we avoid, हमें confront करे, कोई सामने oppose करे हमारे views को, हम defensive हो जाते हैं बहुत बार। हमें appreciation बहुत अच्छा लगता है, but हम अवॉइड करते हैं ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स मोड में जाना। बट देयर आर कंट्रीज यू कैन सी कन्फ्रंटेशन, इटली, स्पेन, रशिया, फ्रांस, इजराइल, वो आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, दे गो वेरी डेप्थ इन आर्ग्यूमेंट टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। इफ यू सी द यूके, of course they avoid, emotionally unexpressive, they will not express much. चाइना, जापान, अगर आप देखेंगे कुछ कंट्रीज में आई कांटेक्ट इज डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है, कुछ कंट्रीज में आई कांटेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। तो ज्योग्राफिकली ऑल्सो आपको क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस पता होने चाहिए, कैसे लोग कम्युनिकेट करते हैं, जिनसे आप नेगोशिएट कर रहे हैं उनके वर्ल्ड में जाना पड़ता है। ऑल ऑफ अस आर एनएलपी प्रैक्टिशनर्स, लॉट ऑफ अस, सो वी नो दैट वी हैव टू बी, एवरी पर्सन हैज देयर ओन वर्ल्ड एंड टेरिटरी, हमें उनके वर्ल्ड में जाके नेगोशिएट करना पड़ता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मिरर इमेज, reframing situation, all those kind of NLP techniques very very useful in negotiations. And then you can very well see on the communication piece, body language 55% मैटर करता है इन नेगोशिएशंस ऑल्सो। वर्ड्स आपके 7% ही है, तभी कहते हैं ना हिडन थिंग्स को समझना। वॉइस मॉड्यूलेशन, इवन एनएलपी में आपको पता है, जब नीचे कोई राइट में देखता है तो द पर्सन इज फीलिंग डिस्कनेक्टेड, नॉट विद यू, पर्सन इज सीइंग राइट साइड, वीएके मॉडल, वी लर्न ऑल दिस थिंग्स। So ये all things helps us lot in negotiation also. Person is defensive with us, keen when he's putting, relax बैठा है, टेबल पे हाथ रखे हैं, नीचे हाथ हैं, all those things really helps to know how the negotiation is going. And this is one of the kind of a gift which I got from some of my good friend, and I given this book to many people as a hard copy also gift, because I learned a lot from this book on negotiating. Never Split the Difference by Chris was and Raj. So you can see, negotiate as if your life depend on it. This is the way we should learn. And I have many great books I can share maybe later on, like Getting to Years. This is another very good book on negotiations. And this guy Chris was the FBI negotiator, जो terrorists से negotiate करते थे deal when hostages cases होते थे. So you can learn, even YouTube you can see that. Okay, I will just take a pause again here, any point here, and then Rajeshwari, how much time I have, accordingly I will go with the pace. No questions, then I'm moving. These are I'm not going to cover, but these are the 2 cheat sheets, and I will just want to hear from any of you. Are you able to see my screen? Because ऐसा नहीं कि disconnect तो नहीं हुआ ना आप लोगों से? No, it's You visible. can see? No, you are Yeah, it's visible. able Perfect. to see. No, Yeah. perfectly Yeah. fine. It's perfectly fine. Thank you. So you can see our side and their side. Of course, I'm going to share the slide, so you don't have to copy paste or anything. I will going to share with this community. आपको अपना इंटरेस्ट, सामने वाले का इंटरेस्ट, MIT, व्हाट इज मस्ट फॉर मी, व्हाट इज आइडियली, व्हाट इज ट्रेडेबल, अगर मैं क्या ट्रेड कर सकता हूँ, क्या मैं छोड़ सकता हूँ जब मुझे कुछ पाना है सामने से, उनसे मुझे क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, क्या नहीं करनी है, मेरा प्लान बी क्या है, मेरी बार्गेनिंग पावर कैसी है, ये बार्गेनिंग पावर पे एक स्लाइड है विच विल कम नाउ, एंड फाइनली मेरा टारगेट प्राइस क्या है, मेरा रिजर्वेशन प्राइस क्या है, मैं कहां पर आके रुक जाऊंगा, इसके आगे ये मेरा ब्रेक इवन है, इसके नीचे मैं नहीं जाऊंगा। जोन ऑफ पॉसिबल agreements, zopa is the word you can see later on the internet also, इसके इस जोन के नीचे मैं नहीं जाऊंगा, और क्या मेरा स्टार्टिंग प्राइस क्या रहेगा। एंड देयर इज अ स्टेटमेंट, अगर आपको 1 करोड़ की डील करनी है तो आपको स्टार्ट करना है 40 लाख से, 40% से, एंड यू डोंट हैव टू लाई कि मेरे को 40% की और ऑफर मिल रही है, आपको कहना है मेरा बजट ही 40% है, बट आई नीड दिस,
अब नाउ यू टेल मी, यू आर द बेस्ट जज, आप मुझे कैसे दे सकते हो? ओके, एंड हेयर राइट साइड में स्किल्स हैं, आप देख लेना, बांटना एंड ऑल सब कुछ, आई विल नॉट टेक देयर टाइम. This one is the four quadrant approach, which is known as Kraljic purchasing portfolio matrix. कस्टमर कैसे देखता है अपने सेलर को? लाइक एग्जांपल, किसी को कुछ खरीदना है तो वो 4 क्वाड्रेंट में देखता है. अगर सप्लाई का रिस्क है, ज्यादा जगह से नहीं मिल रहा है, सप्लाई का रिस्क हाई है और इम्पैक्ट भी हाई है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट, इट का मतलब हमें बहुत कम ही सेलर है वहां पर, तो वो स्ट्रेटेजिकली विन विन ढूंढेगा वहां पे कि यस, मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, मुझे इसके साथ स्ट्रेटेजिकली एक रिलेशनशिप डेवलप करते हुए लॉन्ग टाइम के लिए इसी के साथ चलना है, क्योंकि दैट पर्सन, दैट मेंटर, दैट कोच, दैट ट्रेनर एक्स वाई जेड इज गिविंग द बेस्ट वैल्यू टू मी एंड द बेस्ट प्राइसिंग. नेक्स्ट आता है लिवरेज वाला, जहां पर आपको पता है मेरा रिस्क ज्यादा बड़ा नहीं है, ऐसे और भी कोचेज हैं और भी मेंटर हैं, तो और मेरा इम्पैक्ट जरूर हाई है, यू कैन सी इस क्वाड्रेंट में लेफ्ट साइड में. ठीक है, इम्पैक्ट हाई है मगर सब रिस्क इतना बड़ा नहीं है, तो मैं वहां लिवरेज करूंगा मार्केट को. देखो ये इस प्राइस पे ही मैं जा सकता हूँ, इतना ही मेरे पे टाइम रहेगा. देन यू कैन डिस्कस, आप आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में से बेस्ट चूज कर सकते हैं एंड यू कैन लिवरेज अकॉर्डिंगली. तीसरा क्वाड्रेंट है ये वाला, सप्लायर रिस्क, जहां पर रिस्क है ही नहीं और फाइनेंशियल इंपैक्ट भी नहीं है. अगर मैं नहीं करूंगा, कोचिंग ट्रेनिंग नहीं लूंगा, मेरे पे कोई इंपैक्ट नहीं है, रूटीन में है, देन मैं अपने एफर्ट्स को मिनिमाइज कर दूंगा, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा. मैं लॉन्ग टर्म के लिए अगर 3 साल का कोई छोटा पैकेज मिल रहा है लेके छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरी लाइफ पे इंपैक्ट नहीं है. एंड फोर्थ इज, जहां पर सप्लाई रिस्क काफी हाई है, इम्पैक्ट नहीं है, बहुत छोटे से केस हैं. छोटे केसेस में अगर सपोज 3,000 रुपीज का कोई कोर्स है, लेके खत्म करो, पढ़ लेंगे, बाद में देख लेंगे क्या नेगोशिएट, क्या दिमाग लगाना है. कॉम्प्लेक्सिटी है वहां पे मगर हमारे पे टाइम नहीं है. ऐसे केसेस पे बॉटल नेक को हमें फ्रीज करना ही है. कहते हैं ना, चूज योर बैटल वाइसली, पुट योर टाइम एंड मनी वेयर इट मैटर, ऊपर वाले क्वाड्रेंट में, यहाँ पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. अगेन आई विल टेक क्वेश्चन आफ्टर दैट. सेम वे में अभी सेलर के पॉइंट से देखते हैं. अगर उसकी डिपेंडेंसी हाई है, उसके कोर क्लाइंट ही वही हैं, अगर वो चले जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. और उसकी अट्रैक्टिवनेस अकाउंट भी हाई है, बिग टिकट केसेस जो होते हैं, तो वो कोर है, वहां पर आपको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी. यू कैन सी ऑन द राइट साइड, फाइट टू कीप अकाउंट, वो कहीं चला ना जाए मेरा कस्टमर. सप्लायर इस तरीके से देखेगा. लेफ्ट में आते हैं, अगेन लेफ्ट में आते हैं, जहां डिपेंडेंसी लो है बट अट्रैक्टिवनेस ऑफ अकाउंट है, प्रॉफिटेबल है, वहां पे प्रॉफिट मिलेगा वहां पे, बट अभी डिपेंडेंसी नहीं है, अगर नहीं आएगा तो भी चलेगा. वहां पर आप कोशिश करते हो नर्चर रिलेशनशिप, आज वो कस्टमर नहीं है बट वो कल बन जाएगा. अपॉर्चुनिटीज वहां पर हैं, तो प्रोएक्टिवली आप कुछ कुछ सर्विसेज देना शुरू करते हो, क्योंकि फ्यूचर में वो आएगा और आएगा तो मेरे को बेनिफिट करेगा, अट्रैक्टिवनेस है. तीसरा आता है, डिपेंडेंसी भी नहीं है क्लाइंट पे, अट्रैक्टिवनेस भी नहीं है, तो वो न्यूसेंस है. अगर कोई अननेसेसरी कस्टमर आपसे 10-10 बार पूछ रहा है आके, आप उस पर टाइम नहीं लगाना चाहोगे कि सॉरी ये मैंने दे दी है सर्विसेज, आपको लेनी है ले लीजिए, नहीं तो आई एम रिस्पेक्टिंग योर डिसीजन, और बाहर आ जाएंगे. चौथा केस है जहां पे डिपेंडेंसी आपकी हाई है और लो अट्रैक्टिवनेस अकाउंट है. जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ, जहाँ पे एक्सप्लॉयटेबल, मतलब वहां पर आपको आराम से ज्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं, आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करोगे क्योंकि उसको और नॉलेज ही नहीं है बाहर की, तो आप बोलोगे भैया यही है, ले लो और खत्म करो, और वहां पर आप मेक यू कैन मेक द सिनारियो, आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो वहां पर, बेस्ट एक्सप्लॉइट इन द नॉट ए नेगेटिव टर्म. अगर वो जाएगा तो भी आपकी लाइफ पे कोई इंपैक्ट नहीं है उस केस में. तो दीज आर द थिंग्स, और ये दोनों क्वाड्रेंट को जो मैच करते हैं परचेजर और सेलर को, यू कैन सी 4 क्वाड्रेंट अप्रोच. दोनों के लिए बॉटल नेक है, दोनों के लिए स्ट्रेटेजिक है, तो दोनों जीतेंगे. लेफ्ट वाले के अंदर बायर जीतेगा क्योंकि उसके पास बार्गेनिंग पावर है. नीचे वाले में जहां पर एक्सप्लॉयटेबल हो आप, जहां पर बायर के पास और ऑप्शंस नहीं है, वहां पे सेलर जीतेगा. और यहाँ पर दोनों के लिए, किसी के लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कोई नहीं जीतेगा, दोनों फाइट करेंगे, जिसने जीत लिया, अदरवाइज इट इज दैट वे. नाउ आई विल टेक ए पॉज इफ एनी वन क्वेश्चंस, अदरवाइज आई विल गो टू माय सेकंड लास्ट स्लाइड. नो? Should I take silence as no? Perfect. Okay, this is the one event which I shared. I attended recently, and this slide is mainly for our women's, not only for women's, even the men who are in this room, how they should work and take the accountability, support our women's leader in company if you are in job, how your colleagues, if you have family, your sisters, daughter, how they should shape up their career in life and how they can negotiate. And negotiation is again, the relevance is negotiation only.
The topic was which I had bridging generation, breaking barriers, and shaping the future. But I will talk in negotiation terms. So first is इट इज रिप्रेजेंटेशन जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये स्लाइड, इट इज फॉर इंडिया. इंडिया की ही बड़ी बड़ी जो लीडर्स हैं, बिग बिग फार्मा कंपनीज के जो हेड हैं, एफएमसीजी के जो हेड हैं, उनका एक डिस्कशन का आउटकम है ये. एंड दिस इज वन ऑफ द टर्म विच आई एम श्योर मेनी ऑफ यू लव दिस स्टेटमेंट विच आई लव्ड लॉट. लेट वुमेन बी सपोर्ट सिस्टम फॉर वुमेन. एक हिंदी में एक कहावत है विच मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, कौन किसका दुश्मन है एक हम बोलते हैं कई बार, तो उसको चेंज करते हुए कॉर्पोरेट सिस्टरहुड कैसे बनाना है. बोबो इज द टर्म. बी वन ब्रिंग वन. इफ यू आर ए वन वुमेन लीडर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेक ए मिशन, एक वुमेन लीडर आप और खुद बनाएंगे. एंड सेकेंड इज बी वन डेवलप वन. अगर आप कंपनी में हैं जहां पर भी हैं, अगर आपको किसी ने डेवलपमेंट में सपोर्ट किया है तो यू ऑल्सो सपोर्ट वन पर्सन एटलीस्ट. इट इज जस्ट लाइक ए, इफ यू सीन द मूवी जय हो, उसने कहा था ना, आप एक पर्सन की हेल्प करो और मुझे थैंक यू मत बोलो, आप 3 लोगों की हेल्प करो, उन 3 को बोलो आगे 3 की हेल्प करें. तो दिस इज जस्ट काइंड ऑफ ए मिशन. वन ऑफ द कॉर्पोरेट लीडर टोल्ड अस कि आई एम इन दिस मिशन, बी वन ब्रिंग वन, बी वन डेवलप वन. ये जितनी वुमेन एम्पावरमेंट को है, वुमेन डाइवर्सिटी को है, लेके ऊपर लेके आ सकता है. तो लेट्स सपोर्ट दिस मिशन. विद दिस लेट मी गो टू द बैरियर्स. व्हाई वुमेन लीडर्स आर अनेबल टू नेगोशिएट overall? Because of one important thing, they consider themselves as a super woman. हमको फैमिली भी मैनेज करनी है, करियर भी मैनेज करना है, दोनों चीजों में अपना 100% 200% Yes. देने में लग जाते हैं. वाई? इसके ऊपर क्वेश्चन पे हम आएंगे. वाई इट शुड नॉट हैपन दिस वे. सेकेंड इज पे पैरिटी. लाइक जेमी हैज पॉइंटेड आउट कि समटाइम हम परसेप्शन बना लेते हैं, मार्केट में लोग नहीं देंगे पैसे. सिमिलर वे वुमेन्स क्या पॉइंट बनाती हैं एंड सेटल फॉर दैट. सॉरी राजेश्वरी, एनी पॉइंट? No, Gaurav. Okay, thank you. So settle for less because we women feel we are not the breadwinner. हमारे हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, हमारे फादर कर रहे हैं, हमारे आसपास ब्रदर जॉब कर रहा है. अगर मैं थोड़ा कम में भी सेटल हो जाऊंगी, सामने वाली अगर एचआर नहीं मान रहा है, कस्टमर नहीं मान रहा है, कोई बात नहीं, मैं सेटल इस बार कम दे देती हूँ. नहीं, यू डोंट हैव टू सेटल फॉर लेस. एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल मस्ट हैव गॉट द स्माइल ऑन देयर फेस, क्योंकि हम ये चीज करते हैं मेनी टाइम्स. हम सेटल फॉर लेस हो जाते हैं. एंड थर्ड इज unconscious and conscious bias. Sometimes we when I'm saying I'm talking for women, we feel on the competency bias कि मैन हमसे ज्यादा, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनको ज्यादा है, उनकी कमांड है, उन्होंने शॉप फ्लोर पे काम किया, उन्होंने इतना मार्केट में रिसर्च, वो ब्रेड विनर हैं, तो उनको तो ज्यादा मिलेगा ही. नो, वुमेन्स कंसिडर समटाइम्स सर्टेन रोल्स. ये मार्केटिंग का, सेल्स का रोल है, ये प्रोडक्शन एरिया का रोल है, ये शॉप फ्लोर का रोल है, ये मैं थोड़ा कर सकती हूँ ये रोल. उसकी वजह से आप कितनी अपॉर्चुनिटी लूज कर जाते हैं. ट्रैवल करना होता है. अरे आपको जस्ट मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा. वन ऑफ द वुमेन लीडर शेयर्ड विद अस कि उसको एक इवेंट में लोग लेके ही नहीं गए क्योंकि इनोवा जा रही थी. इनोवा में 4 लोग थे पहले से, तो उनको लगा उस वुमेन लीडर को पीछे तो ना बैठाएंगे पीछे वाली सीट पे, क्योंकि सीनियर लीडर आगे बैठेंगे. उसकी वजह से उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी. हो सकता है वो बैठने को तैयार होती, उसने कहा कि अरे मेरे से पूछते तो नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आगे बैठे हैं पीछे, मैं उस अपॉर्चुनिटी को लूज नहीं करना चाहती थी, सीनियर लीडरशिप से मिलना. तो ये समटाइम बायस होती है. हम खुद ही सोच लेते हैं कि अरे वो लेडी थी ना पीछे बैठेगी, लेडी थी ना ये करेगी. वाई? तो वी शुड स्टैंड फॉर आवर सेल्फ. इंटरव्यू क्वेश्चंस में लोग पूछते हैं आर यू मैरिड, आर यू एक्सपेक्टिंग बेबी, आपका आगे करियर प्लान क्या है, आप ये रोल में कर सकती हैं क्या. वाई दिस क्वेश्चंस कमिंग टू लेडीज ओनली, वाई नॉट टू मैन. आर यू मैरिड? क्यों उनसे क्वेश्चन नहीं होता कि मैरिज के बाद उनका सिनेरियो चेंज हो जाएगा, क्यों उनके किड्स का सिनेरियो चेंज हो जाएगा. वाई वुमेन टेक दिस लोड ऑन देमसेल्फ. एंड अनदर इज सिमिलैरिटी बायस. अरे आदमी ले रहा है इंटरव्यू तो वो आदमी को ही चूज करेगा, राइट. ये लेडी की बातों से लग रहा है ये डोमिनेंट है, ये तो बहुत हाईली एक्सपेक्टेशन है, ये तो मुझे लेगी ही नहीं, मेरी पर्सनल चीजों को समझेगी नहीं. सिमिलैरिटी बायस, ये तो मेरी तरह नहीं है. इन चीजों की वजह से अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस बायस, वुमेन्स लॉस्ट लॉट. एंड यू नो द करंट सिनेरियो, पैकेज में भी कितना इम्पैरिटी है. अब before going to the action mode, are you resonating? I really want at least few yes on Teams, on chat, or people can unmute if you're resonating. Otherwise, there is no meaning to go into the Yes, action mode. yes. Yes, Gaurav. Okay. Is it only Rajeshwari or other feel also same? So please go ahead, please. Very nice, Thanks, very Sumita. interesting. Sure. Thanks, Sumita.
And yes, perfect. Let's see the action, how you can break this barrier. One is, don't be superwoman, learn the art of delegation. ये वाला मार्केट का काम मैं नहीं करूंगी, आप चाहे ऑनलाइन मंगवाइए, ये कैसे मंगवाना है, ये वाला काम इसके लिए मेड होनी चाहिए। आपको काम डिवाइड करने आने चाहिए, बेटा ये काम आप ही करेंगे, बेटी ये काम आप ही करेंगे, ये सबको मिलके चलना है। जो भी, इफ आई एम अर्निंग फॉर फैमिली। आर्ट ऑफ डेलीगेशन, जो कहते हैं ये 5 मिनट का ही काम है ना, मैं कर लेती हूँ, ये 1 घंटे का नहीं, उसको जितनी देर में समझाऊंगी उतनी देर में तो मैं खुद ही खत्म कर लूंगी। नो, यू हैव टू लर्न आर्ट ऑफ डेलीगेशन। एग्जाम्पल, व्हेन वी से, अगर आपको अपनी पर आवर कॉस्ट पता है, सपोज एग्जाम्पल, आई नो माई पर आवर कॉस्ट इज 2400 रुपीज, उससे नीचे का काम मैं नहीं करता, 500 रुपए का काम होता है, मैं मना कर देता हूँ। इफ समवन टेल मी वहां पे ओला से जाने की जगह आप छोड़ दो, सॉरी आई डोंट, मन है, टाइम है, मैं खुद से जाना चाहता हूँ, जाऊंगा, बट 2400 रुपए से कम का 1 घंटे का काम होगा, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, आई एम गोइंग टू डेलीगेट, आई एम गोइंग टू आउटसोर्स। आस्क फॉर सपोर्ट, पीपल डोंट आस्क फॉर सपोर्ट, उनको लगता है कोई है ही नहीं मेरे आसपास, आपके आसपास पूरी दुनिया है, यू हैव टू आस्क फॉर सपोर्ट। मांगो तो सही, यूनिवर्स विल गिव यू एवरीथिंग। बी असर्टिव, आपको असर्टिव होना पड़ेगा, यू हैव टू बी फर्म व्हाट यू आर आस्किंग इन योर करियर, विद योर फैमिली, विद योर स्टेक होल्डर, लाइक इन योर लाइफ हुज द मेन स्टेक होल्डर इज योर पार्टनर, उसको स्टेक होल्डर को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। लाइक एग्जाम्पल, आई कैन टेल यू 4 years बैक आई टोल्ड टू माई फैमिली, आई टोल्ड देम सिट विद मी, और उनको बोला, मैंने कहा 1 साल मुझे भूल जाना, वीकेंड्स पे मैं नहीं हूँ, क्योंकि आई एम गोइंग टू ट्रांसफॉर्म माई लाइफ, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, मैं इस पैकेज को डबल करने वाला हूँ, मैं प्रमोशन पे प्रमोशन में अट्रैक्ट करने वाला हूँ मनी को, और आपकी लाइफ अलग हो जाएगी। तो बी असर्टिव व्हाट यू वांट, डोंट बी इन गिल्ट एंड शेम मोड। ये गिल्ट एंड शेम मोड इसीलिए आता है क्योंकि आपको सब कुछ करना है और सब कुछ आप नहीं कर सकते, यू आर ओवरवेल्म्ड। ओके, बी अफर्मेटिव, कि आपको मांगना है, आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। पे पैरिटी वाला जो पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेगोशिएशन स्किल्स आपको, लेट मी टेल यू वेरी ओपनली एंड विद ऑल रिस्पेक्ट, डोंट टेक मी अदरवाइज, आप बार्गेनिंग में वुमेन्स आर ग्रेट, नॉट इन नेगोशिएशंस। व्हाई आई एम सेइंग दैट, आई कैन टेल यू, आप एक चीज को दे दो दे दो दे दो, हो जाएगा, आप मान कर लोगे, इस तरीके से आप नेगोशिएट करते हो, वो नेगोशिएशन नहीं है, वो बार्गेनिंग है, कि हाँ भैया हो जाएगा, भैया इतने का ही मिलता है सब जगह, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प। आपके पास फैक्ट्स के साथ आपको बात करनी ही पड़ेगी, देन इट्स ए नेगोशिएशन। आपको समझना पड़ेगा सामने वाला कॉस्ट क्यों मांग रहा है, आपको अटेंशन टू डिटेल्स, लिसनिंग, टेकिंग, रिस्पेक्टफुल, एम्पैथी, उसमें जाके वहां से बेस्ट निकालना पड़ेगा। एंड आई एम मेनली टॉकिंग फॉर द पे पैरिटी। आपको ब्रेड विनर वाले पॉइंट में रिमूव जेंडर बायस, कि मैन को तो इतना मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा, आपका सेल्फ बिलीफ ही नहीं होता है कई जगह पे ना, आपको लगता है नहीं नहीं मुझे से ज्यादा नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? आई हैव पीपल इन माई टीम, वो बहुत ही क्लियर हैं, दे आर वेरी डिमांडिंग इन ए राइट मैनर, पोलाइट हैं, बट दे नो देयर सेल्फ वर्थ। आप लोग अपनी सेल्फ वर्थ को ही अंडर एस्टिमेट कर लेते हो, तो आपको अपनी सेल्फ बिलीफ बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा इफ यू वांट द बेस्ट फॉर यू। एंड थर्ड वन, विच इज लास्ट एंड नॉट लीस्ट, मेंटरशिप। आपको मेंटर चूज करने में क्यों टाइम लगता है, नहीं लगना चाहिए। ये अनकॉन्शियस कॉन्शियस बाइस तोड़ने के लिए भी आपको मेंटर चाहिए। lot of people go into their shell अपने करियर में, मे बी आफ्टर बेबी, after getting married, they face the challenge to bounce back in their career after a break. So like in my company also there is a WLI, Women Leadership Initiative. I am the mentor of, there are many women, उनका भी मैं mentorship करता हूँ, मेरी टीम में है, मेरे पास मेरे जितने mentors हैं that is also all women, मेरे 3 mentors हैं, तीनों ग्लोबल हैं, तीनों वुमेन्स हैं। तो ये बायस तोड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नोइंग योर मेंटर। तो आपको अपना मेंटर ढूंढना पड़ेगा, करियर कोच ढूंढना पड़ेगा, और मे बी whomsoever कैन हैंड होल्ड। एंड ब्रेकिंग बायस ट्रेनिंग लिंक्डइन पे बहुत सारी हैं, अलग अलग एरिंग, हम बायस जो हो जाते हैं। तो आई एम टेकिंग नाउ ए पॉज बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू रेजोनेटिंग, आर यू फीलिंग व्हाट आई एम मेकिंग सेंस टू यू? या, Yes. थैंक यू राजेश्वरी। एनीवन एल्स? आई वांट टू हियर, अगर यहाँ पे भी वॉइस नहीं आ रही तो और जगह पे एक्शन पे वॉइस कहाँ आएगी? गौरव, आप खाली कुछ कह नहीं रहे हैं, आप हमारा अंदर झंझोड़ रहे हो। Yes, so true, Sumedha ma'am. मैं सोच रही हूँ कई चीजें लाइफ में जो कभी सोची नहीं थी या ऐसे ध्यान में नहीं आ रही थी, अभी सडनली एक एक करके आती जा रही हैं। थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली, नो थैंक्स। एंड हमें वो
एक वुमेन कहते हैं ना बहुत सारी हैट पहने रहती हैं, बहुत सारी पर्सनालिटी की, मैं मदर हूँ, मैं वाइफ हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बहन हूँ, मैं वाइफ, तो इन सब चीजों में आप नहीं, आप सबसे पहले सेल्फ हो। जब तक सेल्फ लव आपका स्ट्रांग नहीं होगा, टिल द टाइम यू आर सीइंग इन योर सेल्फ इन द मिरर एंड यू से वाओ दिस इज द बेस्ट पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड, दिस द बेस्ट पर्सन, ये पर्सन को जो चाहिए उसको वो मिलेगा, तब तक आप ये सारे रोल्स नहीं कर पाओगे। एंड स्टार्ट, कहते हैं ना लेस इज मोर, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है लेस इज मोर। जितना कम काम, लाइक एग्जांपल आई कैन टेल यू वेरी ओपनली, I work very less since last 4 years in every area, and I'm most and most productive and getting the most results when I'm doing less. Okay. With this last thing, E plus R equal to O, which matters for everyone, whether it's a negotiation, whether any event of the life. E is the event. Event is not your in hand. And Bharat ji also said about this कि आपके सामने 10% थिंग है जो खुद होती हैं, वो है इवेंट। आपका रिस्पॉन्स क्या है? आर इज फॉर रिस्पॉन्स और इज इट रिएक्शन? दैट चेंज द आउटकम। अगर बच्चे ने शरारत की और आपने रिस्पॉन्स में कहा बेटा मत करो, तो आउटकम इस बच्चा समझ जाएगा। आपने इवेंट के रिप्लाई में थप्पड़ मार दिया, स्लैप हिम, स्टार्टेड शाउटिंग, आउटकम विल बी चेंज। आपका बच्चा भी डर जाएगा, वो कुछ भी नया करने से डरेगा, और आपका पूरा माइंडसेट जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आउटकम इज इन योर हैंड, like unconscious and conscious by rise. Unconscious is 90%, conscious is 10%, but 10% is your gatekeeper. गेट से एंटर ही मत होने दो ना इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स को, 90% आएगा कहाँ से? So this is the way I think I will end, and happy to have any questions if anyone has. And slide in any case you will get that from me. Gaurav, can I add something? Yeah, please. Yeah, Gaurav, first of all, thank you very much for presenting this in this particular today's session is eye-opening for me and self-education, because there are so many points you just open and I just cross-check all the negotiations I did for so many years. I am currently based in London, UK. So the point which you mentioned, which I completely 100% agree, is there are cultural barriers and country-wise people change, the way they discuss, negotiate. So that is also a touching point. The last slide which you mentioned about the barrier and actions, love to know all the actions against those barriers. Those are not only applicable for women, for everyone, every individual. And yeah, definitely need to go through the session again. But only one my question is to you is, after listening to you, I feel really positive that in future I will go into negotiation with all positivity, because yes, there are so many points. But only one question to how I can reach to you, how to contact you, because there are so many small pieces here which definitely need to discuss. You address one of these, which is the pay. Always in our yearly PRA, the meetings which happens, it is a negotiation. I work in customer base, this thing as a program manager. So their negotiation happens. So yeah, so today's this session is actually a turning point for me. But thanks for presenting this to this group. And yeah, only one question to you: how I can make contact to you? Thank you. Gaurav, Is you are Gaurav speaking? unmute. I'm not able, we are not able to hear you, Gaurav. What is speaking? Please. Still not? Sorry. Am I audible now? Yes, now audible. Yes, you are audible. Unintentionally, I Yeah. clicked on mute. So I was saying to you that I work in GSK, who's the GlaxoSmithKline pharmaceutical and UK-based company only. That's the reason I work very closely with UK guys. I know the way they work. I'm happy to connect on weekend Yeah. anytime. Yeah, maybe short call we can do. Yeah, Awesome. sure. Awesome. And one thing, Thank maybe Gaurav. which is coming in my mind, like last 2 years, I learned graphology, handwriting analysis. I learned speed reading. I am the part of executive leadership. I do anti-procrastination program of India. Why I was able to do a lot? Because I was able to negotiate and say no to many people. Art of delegation I was using. Whichever I'm telling it, I'm already applying in my life. That's the reason I'm able to achieve a lot. And Rajesh, I can see on camera, Rajesh and me are in the same community, another community. So he knows that we discuss time to time these things. Yeah. Awesome. Perfect. Okay. Thanks, Milind. Thank you, Gaurav. Any other maybe
inputs, reflections, or thought process happy to have before handing over to Rajeshwari. Yeah. Yeah, excellent presentation, Gauravji, and excellent delivery too. It's a wonderful way you explain how we can negotiate in any condition, and we can have a win-win situation for both the parties. That is what is Yeah. important. Nobody should feel that he has lose, otherwise the relationship will get spoiled. So we should have a win-win situation by following your guidelines. Yeah, thanks for that. Sure, sure. And Bharat ji, you reminded me very good point. In my company, what happened, same thing happened. One supplier was unhappy after negotiation got over. And during the discussion, he was not saying, he was a bit silent. And that person I know, he was extrovert. So I asked him, what happened? Let me know. Then he said, Gaurav, one of your person negotiated very hard and threatened कि भई negotiation नहीं दोगे price तो आपको order नहीं मिलेगा. I reopened that negotiations again. मैंने कहा नहीं, क्योंकि योर पार्टनर, अगर मैं पार्टनर अप्रोच से जा रहा हूँ तो वो मैं खुश और सामने वाला दुखी करके मजा ही नहीं है काम करने का बिजनेस. एंड आई नो समटाइम्स वी हैव द टेंडेंसी, भरत जी यू राइटली सेड, हमारी टेंडेंसी है और दे दो. वाई? आपको वाई ही क्लियर नहीं है. आप 10% पे 20% 30, आपको सेटल कहाँ होना है? पीपल डोंट नो देयर, वहां पे हमें सेटल होना है. व्हाट इज द बेस्ट वैल्यू? समटाइम आप सामने वाले के पास कुछ छोड़ोगे तो आपको फ्यूचर में और भी मिलेगा. These people don't understand sometime, and I've been negotiating since 20 years, so I can vouch for it. Win-win रखना बहुत जरूरी है. Yes. Thank you, Bharat ji. Any last comment? Otherwise, back to Bhagyashri. We often hear about the Thank you. negotiations. We often hear about negotiations are very important, but today I got to know something deep about the negotiation and a lot of terminology and what and all we have to focus on. Thank you so much, giving me a different perspective about the negotiation. Yes, there's a lot to learn. Yeah, hope I can learn from you and materials you have provided. Thank you so much. Sure. And one thing I can tell Rajesh to you, like to everyone, अभी information है, maybe some of the insights only. कुछ insights आपको मिली होंगी, but अगर आप doer नहीं बने, which like example आज भरत जी ने जो बोला मैंने लिखा था, very good thought process, which I can tell you, like ABCDE framework, even ABCDEIF framework I made after listening to Bharat ji. B से start होता है birth, and D is the second, death, C is the choice. So BCD clear हो गया. But ये सब तभी हो पाएगा जब E आएगा, which is exposure and experience, and that will come from A, which is action, and that will define your F, which is future. Action, birth, choice, death, exposure, image, and I is for image. आपकी image तभी बनेगी, and F is your future. So, Yes. Excellent. thank you. Yes, Rajeshwari ji, back to you. Thank you so much. It was really a paisa vasool session today. That voice was coming. Both the two great leaders Sorry. are there. Yeah. And last question I forget to ask, have you feel if you are someone was at 2 to 3 आप पहुंचे हैं? When I started asking, initially मैंने पूछा था, proficiency level आपका increase हुआ है क्या? Do you feel? Maybe you can put Yes. on chat also. Yeah. Yes. And वासुदेव जी से भी हमें एक एग्जांपल लेना था कि कुछ आपके, he said 5. So any good insight, any good sharing, happy to have that. मैंने ऐसे मैंने 5 लिखा था आज तक. Good. Perfect. उनको मोड चाहिए. हाँ, वासुदेव जी का बहुत क्लियर. I need the best from the deal. Perfect. Thank you. जब मांगे तो 5 मांगे. So और क्या? I only know ABCDEFG, which was or what we learned as a young boys, was a boy can do everything for a girl. So instead of that, we got a very different line this time. Absolutely. And don't shy away. I can tell one more thing. Don't shy away saying कि women leader से मैं mentoring ले रहा हूँ. मैं हमेशा मेरी जितने भी seniors हैं जिनसे मैं सीख रहा हूँ, they all are great negotiator in their life. Example, one of my leader went to Switzerland alone. उनके बेटा, उनके पेरेंट्स, सब कुछ यही है, हस्बैंड यही है. बट शी सेड 2 साल में जाऊंगी क्योंकि मुझे सीनियर वीपी पोजीशन, सीनियर डायरेक्टर से ऊपर जाना है. और वो वापस आ रही है अभी 2 साल के बाद. बट शी वाज वेरी क्लियर, 2 साल मुझे बाहर जाना ही है, स्विट्जरलैंड में जाके करके वापस आऊंगी मैं. तो आपको अपने लिए मांगना पड़ता है, आपको अपने लिए छीनना भी पड़ता है. गौरव, आपकी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी.
और ये जो सब आपने बिजनेस के बारे में बातें की हैं, नेगोशिएशन, पर मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें इसमें से हमारी डेली लाइफ पे भी डिपेंड करती है कि हम Yes. अपना बिहेवियर पैटर्न कैसे चेंज कर सकते हैं. वेरी गुड इंसाइट. थैंक यू वेरी मच. रियली The way अप्रिशिएट. you do anything, the way you do everything. तो लाइफ में आप छोटी छोटी चीजों में पहले करेंगे तभी एब्सोल्युटली, बढ़ेंगे कर पाएंगे. एब्सोल्युटली. Thank you. Yeah, before closing, I will like to know which book each one of you is reading. So I will come from bottom. Jami, which book are you reading? I am reading that. Just a second, I will tell you. The Magic of Thinking Big. Okay, very good. Yes, Blessed Sandhya, which book are you reading? I am reading I Am Enough. Okay. Deepa Janakarajan, which book are you reading? Who is reading the book recommended by FELD? Yeah, I just stepped Raise out. your hand. All those who are reading, चार्जर चाहिए. you can raise your hands. Okay, so next month onwards, we will stop giving the recommendations because none of you are raising the hands. Okay, that's one work is getting reduced for the admins this time. Sure. Okay, guys, I have to leave. Thank you. I got a good feedback today. Important feedback. Thank you so much. How many of you are aware of the books that have been recommended by FELD? Bharat sir? Rajesh? Yes, it is Shivani? going on leadership, but I am working on another book, 5 Types of Wealth. So Yeah, maybe June 3rd will be the last day of FELD, the way people are not interested in continuing with the things that are there. So I was trying to run the show some way, but I think people are not interested in the running with the theme or reading the books recommended or on those lines. Right? Okay. You can carry on, Rajeshwari. I have done with what I wanted to ask. Thank you so much, Bharat sir and Gaurav sir, for marvelous presentation. It was really a nice session, lots of learning, and I will jot down my points, takeaways, and I will request other also to share their takeaways in the group so that more people should join. See, it's our platform. Again, I'm telling it's our platform. You can use it to groom yourself, as I did in my coaching business. Whatever you can see the changes in me just because of the FELD. I took it very seriously. And I just want to say that take it seriously, read and present. It's our own platform. We are not, we are here only to support. So many good things are coming our ways. Today you can witness this program. You must have seen how many things we have learned in a single session. For this, people have to pay, I think, more than in some of the time in thousands, some of the time in lakh also. But we are getting it free from our own field members. That I wanted to say. Take it seriously. So let's conclude the session today. It's 9:45. Really a great session. yeah, thank you, Rajesh sir. Thank you all for patient watching. Thank you Thank you, very Gaurav much. ji, for wonderful presentation. Thank you. Thank Good you. night, Bye, everyone. everybody. Good night, everyone. Good night.